Thank you for being part of my YouTube family. Your great love for my previous video. I appreciate it, and here comes another creative video. Hope you give me the same love and in the comment section. And today's topic is साथ चलने का रेसिपी। कम्युनिकेशन फैकल्टी होने के नाते मैं छात्रों को सरल लेकिन रचनात्मक एक्टिविटी देती हूँ और डिजिटल मीडिया होने के कारण कई छात्र कई चैनलों से परिचित भी हैं और मैंने इस बार छात्रों के लिए कुकरी चैनल चुना है। मैंने छात्रों से कहा कि मैं आपको कुकिंग मतलब खाना बनाने की कुछ शब्दावली मैं आपको देने वाली हूँ। उन्हें इन और उनको क्या करना है कि ये सामग्रियों को यूज़ करके एक रेसिपी बनाना है और उस रेसिपी का नाम है दूसरों के साथ मिलकर चलना। मैंने उनको कुछ हिंट दिए, जैसे कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो और उनमें कौन कौन से गुण आप पसंद करते हैं। एनीवेज, आई डिड नॉट स्टॉप हियर। उन्हें ये भी बताया जैसे व्यक्ति प्यारा है, वह परवाह करता है, उसके पास आपकी बात सुनने के लिए कान है, समय है आदि। The words given for preparing the recipe were, as you can see it on the screen, I gave them a lot of vocabulary: grill, cook, dish, stir fry, bake, water, cup, caramelize, garnish, boil, microwave, scramble, noodle। अब समझ ही गए होंगे शायद, कुछ लोग नूडल्स भी बनाएंगे। Add, slice, drain, tablespoon, pour, mix, break, grease, combine, knead, chop, measure, peel, dissolve, serve। चैलेंज ये है कि इनमें से जितने भी सामग्री उनको यूज़ करना है, यूज़ करके एक प्यारा सा डिश उनको सर्व करना है। And recipe is going to be a healthy dish. Join me into the kitchen. Add 5 cup smiles along with kindness. Boil till it dissolves thoroughly. With forgiveness, drop the noodles. Appreciating, cook them simultaneously with respect. Add veggies of your choice. Yes, do not be over generous in cooking, else it will be mushy. As per taste, add honesty and trust. Once the noodles are cooked, drain out jealousy and anger. Add 1 tablespoon compassion to it. With creativity, garnish it with fried garlic and few veggies. Serve it in a dish with welcoming and love. Hope you appreciate this recipe with lots of comments. Share the recipe with others. आपके पास साथ चलने का इससे बेहतर रेसिपी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या तो फिर मुझे ईमेल करें। Thank you for watching and have a wonderful day. Stay blessed and God bless you.